Hello students, welcome to my YouTube channel Integrated Physics Studies IPS. एथरे मु ऑलरेडी प्लस 2 सेकंड ईयर सिलेबस कंप्लीट कर सारछि एबे मु प्लस 3 CBCS ऑनलाइन क्लासेस रो वीडियोज गुडा अपलोड करिवि जदि भल लागिला ताले लाइक कर देबो एवं सब्सक्राइब कर देबो जो वीडियोज गुडा मु अपलोड करिवि तार नोटिफिकेशन पई एठी बेल आइकन को ऑल रे सेट कर देबो गोटे इंपोर्टेंट जिंस वीडियोज रो ऊपर एठी जो 3 डॉट्स देखुछो तार क्वालिटी एठी देखो बाय डिफॉल्ट 360 अछि तमे ताकू बढ़े मध्ये परिबो एठी एडवांस रे क्लिक करी तमे रिजोल्यूशन बढ़े परिबो प्रति वीडियोज रे मु पीडीएफ लिंक देबी ताकू एठी ड्रॉप डाउन लिस्ट रो तमे क्लिक करी डाउनलोड मध्ये करि परिबो पीडीएफ को लास्ट रे एठी जो मोर चैनल नेम अछि याकू क्लिक करी तमे एठी प्ले लिस्ट को जाई मु प्रति वीडियोज को यूनिट वाइज एज पर सिलेबस सजाई की रखिथिबी तमे सर्च करि परिबो ओके थैंक यू हेलो स्टूडेंट्स आज टॉपिक रे आमे एनर्जी इक्वेशंस विषय रे पढिबा वेयर वी विल स्टडी अबाउट द इंटरनल एनर्जी फॉर आइडियल एंड वैन डर वाल्स गैसेस देखो जेतेबेले टेम्परेचर कांस्टेंट रोची ताले गोटे रियल गैस पाई इंटरनल एनर्जीटा चेंज होची विथ रेस्पेक्ट टू वॉल्यूम एज वेल एज प्रेशर सो ए जो इंटरनल एनर्जी चेंज du रो गोटे जनरल रिलेशन आमे डेराइव करिबा यूजिंग द मैक्सवेल्स थर्मोडायनामिक रिलेशन फॉर ए pure substance, right? So to begin with, let us assume that this internal energy is a function of volume and temperature. So u is a function of T and V. Then a small change in internal energy आमे पाई परिबा जदि याको आमे डिफरेंशिएट करछु. So du रो value in terms of partial derivative आमे पाइला del u by del T at constant volume into dt plus del u by del V at constant temperature into dV. तापरे du रो वैल्यू आमे जानिछु फ्रॉम द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स TdS माइनस PdV एटी TdS होची हीट dq और PdV होची वर्क डन dW ओके तापरे ए जो रिलेशन आमे पाउछु du इक्वल टू TdS माइनस PdV सो एठी जो dV अछि हला dV देखो ए जगह रे अछि याकू आमे आर पट को नै जिबा और better we can say del u by del v जदि partial derivative बाहर करिबा then it will be equal to T del S by del V at constant temperature minus P. Okay. Now let us use Maxwell's second thermodynamic relation which is del S by del V at constant temperature equal to del P by del T at constant volume. ताले ए term को हमें replace करि परिबा with del P by del T. So accordingly equation 3 will be reduced to this much. Okay, so a equation 4 जो हमें पाइला this is known as first energy equation. Now we know that del u by del T at constant volume is your specific heat at constant volume. এটা কেমতি আসিলা because আমি জানিছু from the first law of thermodynamics dq is equal to du plus pdv. Okay, so at constant volume dv is equal to 0. now एबे हमें कौन करिबा del q by del t जदि बाहर करिबा at constant volume this will be equal to del u by del t at constant volume and this quantity del q by del t is nothing but your specific heat at constant volume so that we are getting this term. Okay, so याकू एबे हमें substitute करिबा and by substituting this in equation 2 and also equation 4 जो हमें पाइला first energy equation so equation 2 हमर कोन थिला this one देखो एठी del u by del t यार वैल्यू तो हे गला cv राइट आउ del u by del v रो वैल्यू हमें पाइछु equation 4 first energy equation so ए दुईटा जाको substitution करला परे equation 2 will be reduced to this much. Okay, now to calculate the change in internal energy which is associated with a given change of state for a pure substance हमें याकू equation 5 को integrate करिबा. Okay, so that we are getting u equal to integration cv dt plus integration over this much having dv. Okay, now for an ideal gas हमें suppose 1 mole of pure substance नेला ताले हमें ideal equation जो देखिबा ideal gas equation of state it is pv equal to RT so that del p by del t at constant volume माने ए टर्म टा यार वैल्यू आसी गला r by v.
और ये जो स्क्वायर ब्रैकेट देखुछ यार वैल्यू आसीबो केते टी डेल पी बाय डेल टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम माइनस पी यार वैल्यू आसीगला डेल यू बाय डेल भी एट कांस्टेंट टेम्परेचर एटा केमती आसिला ना बाय टेकिंग द टेम्परेचर टू बी कांस्टेंट द फर्स्ट एनर्जी इक्वेशन कैन बी रिटन लाइक दिस ओके फर्स्ट एनर्जी इक्वेशन जो आम इक्वेशन 4 पाइला ताकू आम लिखिपर हिसाब से बाय टेकिंग द टेम्परेचर कांस्टेंट ओके पुणी थे देखी दियो फर्स्ट एनर्जी इक्वेशन दिस वन राइट सो आम ये कांस्टेंट टेम्परेचर नहीं जा डेल यू बाय डेल भी एट कांस्टेंट टेम्परेचर दिस इज लाइक दिस ओके सो आम ये या रिप्लेस करदे विथ आर बाय भी सो दैट आर टी बाय भी माइनस पी आ यार भैल्यूटा आसब केते ना इक्वल टू 0 बिकज ये आर टी बाय भी भैल्यू हेब इक्वल टू पी सो पी माइनस पी इक्वल टू 0 ओके आउ गोटे जिनस भी कही रखुची कांस्टेंट टेम्परेचर जेहेतु नहीं आम ये डी टी इक्वल टू 0 ना राइट सो इक्वेशन 6 रे बे याकू आम यूज करि परिबा ये जो इंटरनल एनर्जी रो वैल्यूटा आम पाइला देन दिस स्क्वायर ब्रैकेट टर्म विल बी इक्वल टू 0 सो इंटरनल एनर्जी हो केते सी भी डी टी रो सिंपली इंटीग्रेशन हो फ्रॉम T1 टू T2 T1 T2 हो गला इनिशियल एंड फाइनल टेम्परेचर ड्यूरिंग द प्रोसेस सी भी जेहेतु कांस्टेंट अच्छी बाहर को पड़े आसला सो यू इक्वल टू सी भी देन इंटीग्रेशन T1 टू T2 ओवर dt और सी भी इंटू T2 माइनस T1 right now from equation 7 del u by del v at constant temperature यार वैल्यू तो हमें 0 पाइला okay so here we can easily see that the change in internal energy with volume of an ideal gas is equal to 0 okay एटा जोटा लिखा है मैथमेटिकली ताको इन वर्ड्स रे लिखा है so this is nothing but your Joule's law right where the change in internal energy for an ideal gas at constant volume is equal to 0 that means there is no change okay से जिनसटा एठी लिखा है the internal energy of an ideal gas is independent of its volume when the temperature is kept constant माने isothermal process रे okay now since there is no rise in temperature so there is no change in kinetic energy आज यदि kinetic energy change होनी that means there is no intermolecular attraction in the case of your ideal gases okay so ideal gases रे किछि भी intermolecular force of attraction नहीं okay second एबे देखिबा हमें जदि for the case of your van der Waals gas ताले again we take 1 mole of van der Waals gas or real gas ताले gas equation हमें van der Waals gas equation हैला p plus a by v square एठी v minus b को हमें आर पट को नहीं जाइछु so rt by v minus b हैला small a b तमे जानि छ these are your van der Waals coefficients then p is equal to this much so एबे याको डिफरेंशिएट करिबा with respect to temperature okay del p by del t हमें पाई गला at constant volume will be equal to r by v minus p देखो एटा ए इक्वेशन रे a होची constant volume जेहेतु नहीं छु तेणु v square is also constant so याको यदि हमें डिफरेंशिएट करिबा with respect to temperature then it will be equal to 0 केवल ये फर्स्ट टर्म ऊपर ही डिफरेंशिएशन पड़िबो so that we are getting this result okay तापरे एई वैल्यूटा जो हमें पाइला याको एबे हमें फर्स्ट एनर्जी इक्वेशन जो 4 एटा पाइथिला सेही जगह रे पुट करबा हमें पाइथिला del u by del v at constant temperature is this much so del p by del t रो वैल्यूटा को पुट कर देले rt by v minus b minus p ओके एबे इक्वेशन 7 को देखो एठी rt by v minus b minus p रो वैल्यू आसीबो a by v square ओके सो a by v square simply del u by del v रो वैल्यूटा आसीगला ओके एई इक्वेशन को एबे हमें पुट करबा इक्वेशन 5 रे जो du रो वैल्यू पाइथिला आ तापरे ताको इंटीग्रेट कर दबा ओके सो du इंटीग्रेशन from u1 to u2 is equal to cv dt integration from t1 to t2 plus a by v square एटा रिप्लेसमेंट हो गला यार इंटीग्रेशन v1 to v2 okay so we are getting u2 minus u1 to be equal to cv t2 minus t1 minus a into 1 by v2 minus 1 by v1 okay hence we conclude that it is the internal energy
for the case of a real gas depends on the volume. Okay, ଏଠି ଦେଖ volume ଉପରେ internal energy change ଟା depend କରୁଛି. So with the increase of volume the change in internal energy also increases even though the temperature remains constant. Okay, so kaହିଁକି ଏମିତି ହେଉଛି? This is due to the fact that the potential energy of the interaction decreases as there is increase in the intermolecular separation. ମନେ ରଖ, intermolecular separation increase କରିବ କେତେବେଳେ? ଯେତେବେଳେ ଭଲ୍ୟୁମଟା increase କରିବ. ଓକେ, ଭଲ୍ୟୁମ୍ ଯଦି ବଢ଼ିଲା ତାହେଲେ ମଲିକ୍ୟୁଲ୍ ଭିତରେ ସେପାରେସନ୍ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବ. ଓକେ, ଆଚ୍ଛା, ତାହେଲେ ଏଠି ଆମେ ୟାକୁ କହିପାରିବା ଯେ ଦେୟାର ଏକ୍ଜିଷ୍ଟ intermolecular attraction in case of real gases. Okay, now to study the dependence of internal energy on pressure, we assume that the internal energy U is a function of temperature and pressure. Okay, তাহলে U is a function of T and P. প্রথমে ଆମେ ନେଇଥିଲା U is a function of temperature and volume, ଏବେ ନେବା temperature and pressure ର function. ତାହେଲେ du ର value accordingly in terms of partial derivative এটা already ଜାଣିଗଲା ତମେ, ଏଇଭଳିଆ ଆସିଲା. ତାପରେ ଆମେ first law of thermodynamics use କରିବା according to which du is equal to TdS minus PdV. এই equation को ଏବେ differentiate କରିବା with respect to pressure at constant temperature. So del U by del P at constant temperature is equal to T into del S by del P at constant temperature minus P into del V by del P at constant temperature. Now we use the Maxwell third thermodynamic relation according to which this del S by del P at constant temperature is equal to minus del V by del T at constant pressure. Okay, so এই হিসাবে এই ইকুয়েশনটা রিডিউস করিগলা. So this equation 12 is known as the second energy equation. Now by using this equation 12 in equation 11 जो आमे du रो वैल्यू पाइथिला this one. Okay, so এই equation 11 रे एबे এই equation del u by del p at constant temperature जो आमे पाइला ताकू पुट कर देला, then du रो वैल्यू आसीगला this much. Okay, so आमे देखिला जे in case of ideal gas there is no intermolecular force of attraction, but in case of real gas there exists intermolecular force of attraction. Okay, Thank you.